Hello students, this is your computer class 5. I am KANNAUJ from XAVIER'S Senior Secondary School, KANNAUJ. I am going to start chapter 5, Features of MS Word, part 1. In this video, I will explain this chapter, chapter 5, Features of MS Word. So open your book, be with me. Let's start page number 45. Formatting means changing the appearance of the document to make it more attractive, organized एंड ईजी टू रीड. इट मीन्स फॉर्मेटिंग का मतलब है कि डॉक्यूमेंट को और अधिक अट्रैक्टिव और पढ़ने में आसान बनाने के लिए उसको चेंज करना पड़ता है. टू अंडरस्टैंड फॉर्मेटिंग द एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़पेपर कैन बी टेकन. फॉर्मेटिंग को समझने के लिए न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल लिया जा सकता है. A newspaper has a lot of text printing in different styles to give the message and also keep the appearance interesting. एक न्यूज़पेपर में मैसेज देने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए डिफरेंट स्टाइल में कई अधिक टेक्स्ट प्रिंट होते हैं. Now let us study about some of the features of MS Word that help to beautify a document. अब हम MS Word की कुछ फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने में हेल्प करता है. इंसर्टिंग कॉलम्स और स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम्स आर कॉमन इन न्यूज़ लेटर्स एंड रिपोर्ट्स. न्यूज़लेटर और रिपोर्ट में कॉलम विशेष रूप से न्यूज़पेपर स्टाइल का कॉलम कॉमन होता है. In newspaper style columns, the text is arranged in the form of columns. Newspaper style columns में text को form of column में arrange किया गया है. MS Word allows you to arrange your text in columns similar to the appearance of newspaper. MS Word आपको अपने टेक्स्ट की तरह दिखाने वाले कॉलम में अरेंज करने की अनुमति देता है. टू क्रिएट कॉलम्स इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी पुट इन कॉलम्स. नंबर 2, क्लिक कॉलम्स इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब. कम ऑन पेज नंबर 46. Number 3, click one of the 5 preset column layout that appear. When you click on the columns option in the page setup group or click on more columns option to open the columns dialog box. Number 4, in the column dialog box enter a value in number of columns box. Number 5, if you want to change the width of the columns, change the width field. For equal width column, click the equal column width option. Number 6, to change the amount of space between columns, change the spacing field. Click the lines between button if you want a line between the columns. Number 7, you can look at the preview box to see whether you like the column layout. Number 8, click OK to complete the task. Inserting image. A graphic illustration or an image conveys a stronger message than words. एक ग्राफिक इलस्ट्रेशन या एक इमेज वर्ड्स की तुलना में वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज करती है. पिक्चर्स हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल अपील ऑफ अ डॉक्यूमेंट. पिक्चर्स किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन और ओवरऑल अपील को इमेज इम्प्रूविंग करने में हेल्प करती हैं. यू कैन चूज टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल और अ क्लिप फ्रॉम द क्लिप आर्ट कलेक्शन. इट मीन्स आप किसी फाइल से पिक्चर या क्लिप आर्ट कलेक्शन से एक क्लिप चूज कर सकते हैं. कम ऑन पेज नंबर 47. इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स. If you have a picture that you have rights to use online such as Flickr or your Facebook page or images stored on your SkyDrive, Word 2013 lets you insert straight from the source. It means यदि आपके पास एक पिक्चर है और आपको ऑनलाइन यूज
यूज करने का अधिकार है, जैसे कि फेसबुक पेज के लिए फ्लिकर या आपके स्काई ड्राइव वर्ड 2013 पर स्टोर इमेज आपको स्ट्रेट सोर्स से सम्मिलित करने देते हैं। This means that you no longer have to download an image to use in your document. इसका मतलब है कि आप अब अपने डॉक्यूमेंट में यूज के लिए इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। To insert an online picture, position the cursor at the point where you want to insert it in the document. It means एक ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कर्सर को उस पॉइंट पर रखिए जहां आप इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक द ऑनलाइन पिक्चर्स बटन ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स opens. Number 2, type a word or phrase that describes the image you want in the office.com, Bing or SkyDrive field and press enter key. Number 3, click on the image you want to use to select it. Number 4, click the insert button. The chosen image is inserted into your document. Come on page number 48. Inserting pictures from a file. To insert a picture from a file in a document. किसी डॉक्यूमेंट में किसी फाइल से पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इन दिए हुए स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। नंबर 1, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट द इमेज टू अपीयर। नंबर 2, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। Number 3, in the illustration group under the insert tab, click on pictures. Number 4, the insert picture dialog box will appear. Select the desired image file, then click insert button. The image will appear in the document. A sample document is shown below. Come on page number 49. Inserting shapes. MS Word has many ready-made shapes like stars, banners, callouts, कनेक्टर्स एक्सेट्रा। MS वर्ड में कई तरह के रेडीमेड शेप होते हैं, जैसे स्टार्स, बैनर्स, कॉलआउट्स, कनेक्टर्स आदि। दे आर कॉल्ड ऑटो शेप्स। इन्हें ऑटो शेप भी कहते हैं। यू कैन यूज देम टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर मीनिंगफुल एंड इम्प्रेसिव। आप इन डॉक्यूमेंट को अधिक मीनिंगफुल और इम्प्रेसिव बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। टू इंसर्ट शेप्स फॉलो दीज स्टेप्स। इन शेप्स को इंसर्ट यानी इन शेप्स को शामिल करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक शेप्स बटन। अ गैलरी विद डिफरेंट शेप कैटेगरीज विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। Number 2, click on the shape in the gallery which you want to add in your document. Number 3, now click and drag the mouse pointer where the shape is to be inserted. You can also press the left button once to insert shape in standard size. Word Alt. Word Alt is quick way to make text stand out with special effects. वर्ड आल्ट टेक्स्ट को स्पेशल इफेक्ट से अलग दिखाने का एक बेहतर तरीका भी है। इट हेल्प्स टू गिव द डॉक्यूमेंट विजुअल इम्पैक्ट। यह डॉक्यूमेंट को विजुअल इम्पैक्ट देने में हेल्प करता है। टेक्स्ट इन वर्ड आल्ट इज फॉर्मेटेड इन यूनिक शेप ओरिएंटेशन। कम ऑन पेज नंबर 50 एंड पैटर्न्स दैट कैन बी इजीली मॉडिफाइड एंड कस्टमाइज्ड। इट मीन्स वर्ड आल्ट में टेक्स्ट को यूनिक शेप, ओरिएंटेशन और पैटर्न फॉर्मेट किया जाता है, जिसे आसानी से मॉडिफाइड और कस्टमाइज भी किया जाता है। द स्टेप्स टू इंसर्ट वर्ड आल्ट। नंबर 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक द वर्ड आल्ट ड्रॉप डाउन एरो। नंबर 2, क्लिक अ स्टाइल ऑफ वर्ड आल्ट फ्रॉम द गैलरी। नंबर 3, द प्लेस होल्डर टेक्स्ट you text here appears with the text highlighted. Type your text. You can change the font and size before clicking OK.
resize by dragging the white handles and position as desired. A few examples of word are shown below. Editing word text. We can make change to the word alt text after inserting it in the document with the help of the various options that appear in the format tab. It means हम फॉर्मेट टैब में दिखाई देने वाले वेरियस ऑप्शंस की हेल्प से डॉक्यूमेंट में इसे इंसर्ट करने के बाद वर्ड आर्ट टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं. दिस टैब अपीयर्स व्हेन द वर्ड आर्ट टेक्स्ट इज सिलेक्टेड. यह टैब तब अपीयर होता है जब वर्ड आर्ट को सेलेक्ट किया जाता है. वर्ड आर्ट कैन बी रोटेटेड. द स्टेप्स आर: नंबर 1, सेलेक्ट द वर्ड आर्ट. Number 2, click on the arrow next to the text direction. Number 3, click on any option from the choice shown. Number 3, the word alt will be rotated. Different effects can also be added to the word alt using the shape effect tool. Come on, page number 51. In many newspaper and magazines, कई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ लार्ज कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ अ पैराग्राफ टेक्स्ट. यह देखा जा सकता है कि पैराग्राफ टेक्स्ट की बिगनिंग में कैपिटल लेटर्स होते हैं. द ड्रॉप कैप कैन बी यूज्ड टू बिगिन अ डॉक्यूमेंट और टू ऐड इंटरेस्ट टू अ न्यूज़ लेटर और इन्विटेशन. ड्रॉप कैप का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने या न्यूज़लेटर या इन्विटेशन में इंटरेस्ट ऐड करने के लिए किया जा सकता है. ड्रॉप कैप्स आर सिंपली दैट वन लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ चैप्टर और बुक दैट इज लार्जर देन द रेस्ट. ड्रॉप कैप्स बस एक चैप्टर या बुक की शुरुआत में एक अक्षर है जो बाकी की तुलना में बड़ा होता है. इन वर्ड 2013 वर्ड में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रॉप कैप इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड. 2 तरह के ड्रॉप कैप इफेक्ट हैं जिन्हें अप्लाई किया जा सकता है. दीज आर ड्रॉप्ड एंड इन मार्जिन. ये ड्रॉप्ड और मार्जिन में होते हैं. एग्जांपल्स ऑफ बोथ आर शोन बिलो. द स्टेप्स टू ऐड द ड्रॉप कैप इफेक्ट आर: Number 1, select the letter to which the drop cap effect is to be added. Number 2, click Insert tab, click Drop cap in the text pane. Number 3, select the Drop cap option next from the available designs. Choose the one you would like to apply to your Word document. To remove drop cap, do the following steps. Number 1, select the paragraph contains the drop cap that you want to remove. Number 2, click Insert tab, click Drop cap in the text panel. Number 3, click None. Footnotes and endnotes. Footnotes and endnotes are used in documents to explain comments or provide references for text in a document. फुटनोट्स और एंड नोट्स का उपयोग डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन कमेंट करने या किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है. फुटनोट्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पेज इन डॉक्यूमेंट, whereas एंड नोट्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द चैप्टर, सेक्शन और डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट में अंतिम पेज पर रखे जाते हैं. फुटनोट्स एक डॉक्यूमेंट में अंतिम पेज पर रखे जाते हैं जहां सेक्शन और डॉक्यूमेंट के चैप्टर के एंड में एंड नोट्स रखते हैं. कम ऑन, पेज नंबर 52. Footnotes and endnotes consist of 2 links. The endnotes reference mark, which is number, character or combination of characters which acts as a marker to the text within the document. नोट रेफरेंस मार्क जो एक नंबर कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन है जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के मार्कर के रूप में कार्य करता है. द करस्पॉन्डिंग नोट टेक्स्ट इज अ एक्चुअल टेक्स्ट दैट करस्पॉन्ड्स टू द नोट रेफरेंस मार्क. करस्पॉन्डिंग नोट टेक्स्ट एक एक्चुअल टेक्स्ट है जो नोट
जो नोट रेफरेंस मार्क से करस्पॉन्ड होता है। Commands for inserting and editing footnotes and endnotes can be found on the References tab in the Footnotes group. फुटनोट्स और एंड नोट्स को इंसर्ट करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए कमांड फुटनोट्स ग्रुप में रेफरेंस टैब पर प्राप्त किया जा सकता है। लेट अस लर्न टू यूज देम। Number 1. Place the mouse cursor at the location in the document where you want to insert a footnote or endnote. Number 2. Click the References tab on the ribbon. Number 3. Click the Insert Footnote or Insert Endnote button in the Footnotes group to add a footnote or endnote respectively. Number 4. Type your text in the footnotes or endnotes. Number 5. MS Word displays the footnote or endnote in the document. Navigation between footnotes and endnotes. Let us perform the following steps to navigate between the footnotes or endnotes in a document. Number 1. Click anywhere in the document to navigate between the footnote or endnote text. Number 2. Click the References tab on the ribbon. Number 3. Click the drop down arrow next footnote button in the footnotes group. Number 4. Select the desired option. Smart Alt. Smart Alt graphic is a visual representation of your information that you can quickly and easily create choosing from among many different layouts to effectively communicate your messages or ideas. It means स्मार्ट ग्राफिक आर्ट आपकी जानकारी का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसे आप अपने मैसेज और आइडियाज को इफेक्टिवली के लिए अलग अलग लेआउट्स में से चूज करके जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। द स्टेप्स टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट आर Number 1. Click the Insert tab and choose the Smart Alt button. Number 2. Choose any Smart Alt graphic option from the list displayed. Number 3. Add the text at the required place and also format the same using the Design and Format tab that appears as shown on the right. Some Smart Alt graphic options are shown here. Come on page number 54. Creating macro. Macros are small programs that record your keystroke as you perform a task and then save the action you performed. मैक्रोज स्मॉल प्रोग्राम है जो किसी कार्य को करने के दौरान आपकी की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करते हैं और फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को सेव करते हैं। सो दैट यू मे रिपीट द टास्क बाय जस्ट स्टार्टिंग द मैक्रो। सिर्फ आप केवल मैक्रो स्टार्ट करके टास्क को रिपीट कर सकते हैं। द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू क्रिएट अ मैक्रो। Number 1. Click on the View tab. Number 2. Choose Macros, Record Macro and give the macro a name in the Record Macro dialog box. Now the chapter is completed and thanks for watching this video. If you like this video, please do subscribe, and if you have any queries, questions, so you can ask me on the Zoom app classes when the Zoom app classes are going on. Okay? Thank you.